Hello students, good morning one and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 3, magnetism, chapter number 12. Okay. In the previous lecture we have discussed about some theory part of the magnetism, some terminology about the magnetism also. Today we are going to solve some numerical based on whatever we have done in the previous lecture. So we will see the unsolved numerical from the textbook. Okay. So it is page number 228. Look at the page number 228. And question number 4 का पहला न्यूमेरिकल है a magnetic pole of a bar magnet with pole strength that is qm of 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Okay, now the another bar magnet has pole strength, that bar magnet pole strength of 200 ampere meter and has a length 5 centimeter. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, find the force on the magnetic pole. Okay, so सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे given तो solution that is q suffix m qm which is equal to 100 ampere meter and the distance is given, that is small d is 20 centimeter, is 20 centimeter, but we have to write in SI unit, so this will be 0.2 meter, that is 2 into 10 raised to minus 1. Always remember that whenever we are solving numerical, so please try to write in the power of 10. It makes our calculation easier for solving. Okay. Then another value QMB, bar magnet, pole strength of bar magnet, that is 200 ampere meter, and the distance for this formula 0 upon 4 pi. This is a constant as usual, 10 raised to minus 7 Tesla ampere per meter. Tesla meter per ampere. Okay. So dipole moment of the bar magnet, we have formula dipole moment. यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, we have to find the force. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? That force is equal to product of dipole moment into the magnetic field or magnetic induction. तो magnetic induction भी हमको निकालना पड़ेगा. Okay, so then we will able to calculate the force. अगर फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का याद होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या था? That is Q times E, चार्ज into इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये फॉर्मूला हमको पता है. तो similarly force in magnetism, okay, force in magnetism, that or magnetic force can be, अभी charge is replaced by pole strength and electric field intensity replaced by B, that is the magnetic induction. तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल, तो ये फॉर्मूला याद रखना है. कोई भी पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे जो फोर्स एक्ट होगा, that is the product of pole strength into the magnetic field. Very simple formula to remember to calculate the force acting on a magnetic pole. Okay, so dipole moment of the bar magnet can be defined as, that is capital M ले लो, small m ले लो. Okay, तो small m अगर लिया तो q suffix m, okay, into the distance between the two poles, that is at twice. Okay, so this is the formula. यहाँ पे distance भी दिया है, distance between the as a length 5 centimeter, the total length magnetic length is 5 centimeter. QM दिया है, that is 200 into 5 into 10 raised to minus 2. 2 5s are 10, मतलब 1000 into 10 raised to minus 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 raised to 1. Okay, that is ampere meter square. Ampere meter square is the dipole moment. Now the axial field of the short bar magnet, axial field of short magnet, that is the B axis is equal to, यहाँ पे B axis का फॉर्मूला हमको पता है, B axis is equal to mu 0 upon 4 pi into 2 times dipole moment, to double the dipole moment, divided by
the distance का क्यूब आएगा यहाँ पे, that is the dq. Okay, so which is equal, just do the substitution. So this will be 10 raised to minus 7 into 2 into this 10, that is the magnetic dipole moment of the bar magnet. और जो distance है that is the 20 centimeter, 20 centimeter from the center of the bar magnet. क्योंकि वो 20 centimeter है तो 0.2 का मीटर का ब्रैकेट क्यूब. बेस को सॉल्व करना है आपको. दिस कैन बी कैलकुलेटेड 2 into 10 raised to minus 6 डिवाइड बाय, इसको कैसे लिखोगे, 0.2 मतलब 2 into 10 raised to minus 1 और उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब आता है 8 into 10 raised to minus 3. So dx is equal to 2 by 8 मतलब 1 by 4. Okay, 1 by 4 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to 3. So this can be written as 0.25 into 10 raised to minus 3, which is equal to 2.5 into 10 raised to minus 4. Okay, Tesla. This is Tesla. Okay, 2.4 minus 4 Tesla. Now we have to calculate the force. So force acting, that is the pole strain QMP into P axis. Okay, so QMP दिया है यहाँ पे, that is 100. Okay, so 100 into P axis ना 2.5 into 10 raised to minus 4. So this can be written as 2.5 into 10 raised to minus 2 force Newton. Force अगर है तो न्यूटन 10 में जड़ी. So this is what the answer. Please make a note of this. Just copy कर ले, screenshot ले. Okay, student, let's look at the second numerical. Okay, which is question number 4. Third, two small and similar bar magnet have magnetic dipole moment of 1 ampere meter square. That is a capital M or small m is given each. They are kept in a plane in such way that their axes are perpendicular to each other. Okay, a line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the other magnet. If the distance from the center is 2 meter. Okay, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their center. मतलब प्रैक्टिकली अगर देखना चाहे तो that will be like this. Okay, तो एक बार मैग्नेट ऐसा है along this axis और दूसरा perpendicular. तो इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को जो perpendicular like this. Okay, but they are at some distance, 2 meter distance. Okay, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर. और मिड पॉइंट, मिड ऑफ दिस, मिडल में मतलब 1 मीटर अंतर पे डिस्टेंस पे, तो 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो 1 मीटर पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द पी वी हैव टू कैलकुलेट. बट द कंडीशन इज दैट कि द टू बार मैग्नेट्स आर देयर सेंटर्स लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट अलोंग द एक्सिस, इसका एक्सिस का निकालना पड़ेगा. और इसके लिए वो इक्वेटर रहेगा, जो पॉइंट पी पॉइंट होगा यहाँ पे मिड पॉइंट, राइट, मिड पॉइंट, दैट मिड पॉइंट पी विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट अलोंग द इक्वेटर. तो हमने डिराइव किया है अलोंग द एक्सिस एज वेल एज अलोंग द इक्वेटर. ओके, सो लेट्स फर्स्ट विल राइट अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या क्या दिया, गिवन क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं. So solution दिया dipole moment that is small m is given. Okay, m1 is equal to m2 which is equal to 1.0 ampere meter square. They are kept in a plane. जो distance है small d, right? The distance is 2 meter. Okay, d1 is equal to d2 is equal to 1 meter. और जो total distance है, the total distance is 2 meter. Small d is the distance between their centers. इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. What will be the diagram? So let's imagine the diagram for this. This is one of the bar magnet 1. Okay. So this is the center. These are the poles. Okay. Let this is south pole. This is north pole.
magnetic dipole moment directed from south to north. So this is the direction of magnetic moment, that is M1, which is 1.0 ampere meter square. Okay, and from this यहाँ पे और एक मैग्नेट लेंगे, both are identical magnet. So this is the center, this is the south लेंगे, इसको north लेंगे, और इसको north लेंगे, तो take this south. Doesn't matter. Okay, और ये जो distance है, this is d2 मीटर, और यहाँ पे मिड पॉइंट पे समवेयर हियर इट इज अ पी पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर है. So we have to calculate the magnetic field at point P. Okay, this P along the equator, the equator, यहाँ पे रहेगा B एक्सिस. ओके, और दोनों का रिजल्टेंट में से आएगा, रिजल्टेंट will be like this. Okay, and the angle made by this resultant with axis alpha. Okay, then you can find the direction also by taking the tan of alpha. Okay, so this is what the value, and one more is there, mu 0 upon 4 pi, the value is 10⁻⁻⁷ Tesla ampere per meter. Okay, meter per ampere, sorry, meter ampere, there is some mistake, meter ampere, per ampere, this. So D दिया है, तो simply there center is 2 meter. So first of all we find the magnetic field due to the first magnet along the axis, or magnetic field due to the second magnet along the equator. Okay, so this, let this point is O, let this point be O dash. Okay, यहाँ पे दिया है O dash is 2 meter, O dash is 2 meter, and OP is equal to O dash P, which is equal to 1 meter, which is D1 is equal to P. Okay, then to find the magnetic field at P due to magnet 1 along the axis will be B axis, or B1 ले लेते इसको, it is due to B1, first magnet is ले B1 along this axis, that is mu 0 upon 4 pi into 2m1 upon dq. Okay, whatever the given the condition, that is the short magnet, right? So magnet is short, so use that formula. So this can be written as 10⁻⁷ into 2 times 1.0 into along this direction, okay, x-axis. So by using vector I cap, divide by d cube, but that is a 2 cube. Okay, so it is नहीं d1 है ना, d1 आएगा, सॉरी यहाँ पे d1 आएगा, तो d1 will be 1 meter cube. So after solving this, we will get 2 I cap into 10⁻⁷ Tesla. So this is the B1. Okay. Now magnetic field at P, due to bar magnet 2, we can write B2 is equal to mu 0 upon 4 pi multiplied by, अभी ये along the axis है 2 times, तो along the equator क्या आएगा? Okay, that is along the equator will be half of it the axis. So this is m2 divided by d2. This can be written as, okay, अभी इसको थोड़ा डायरेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो इक्वेटर B एक्सिस,
तो आई कैप इधर आएगा, इधर जे कैप रहेगा. फ्रॉम द इक्वेटर वी हैव टू टेक बी इक्वेटर. ओके, सो दिस विल बी 10 raised to minus 7 into 1.0 into j कैप डिवाइड बाय. ओके, तो ये माइनस है, माइनस m2 आएगा इंटू ओके अपॉन d2 क्यों मतलब 1.0. ओके, so this can be written as 10 raised to minus 7 j cap Tesla magnitude form में. Okay, so magnitude will be 10 raised to minus 7 j cap Tesla. Okay, then we resultant find करना है. The net magnetic induction, the net magnetic induction, the net magnetic induction at P is B is equal to B1 plus B2, which is equal to 2I cap plus J cap into 10 raised to minus 7. This is what. Okay, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. So magnitude of B is equal to mod of B is equal to, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 10 raised to minus 7 which is equal to root 5 into 10 raised to minus 7. Yes. Now we have to find a direction. वो डायरेक्शन फाइंड करना है, जरूरत नहीं वैसे, but let us find a direction. We can find a direction also. Direction is from the diagram. इसका tan alpha निकालेंगे. तो tan alpha is opposite upon adjacent. Okay, so that is tan alpha. Tan alpha is equal to opposite में क्या है B2 और B equator here divided by B axis. Okay, so it is 1/2 आएगा, 1/2 10 minus 7 कट हो जाएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू tan inverse half which is equal to tan inverse half मतलब 26 degree 36 minutes. This is what a direction for the resultant magnetic induction at point P. At point P, due to the two magnets which are mutually perpendicular to each other. Okay, very simple. कोई इसमें difficult नहीं है, right? So just take a screenshot. Okay, student, third numerical which is solved in the textbook, page number 224. Okay, example number 12.1. You can see from the text. A short magnetic dipole. So this word is very important. Short magnetic dipole. So whenever this word is used, short, it means you have to use that condition which we have discussed in the derivation of the magnetic field along the axis and equator at the last. Okay, जो cases दिया है, जो condition दिया है, वो हमको use करना है. The short magnetic dipole has magnetic length 0.5 ampere meter square. Calculating magnetic field, that is B, at a distance of 20 centimeter from the center of the magnetic dipole along the axis and equatorial line. Okay, suppose you have provided the bar magnet like this, right? तो ये bar magnet दिया है, and that is a short magnetic dipole. Okay, short magnetic dipole. So let this is the south, this is north. Okay, this is small L, this is small L, and ये जो total distance है, this total distance is twice L. Right, and we have to find a magnetic field induction at a distance of 20 centimeter from the center of the dipole. मतलब यहाँ से let this point is P. तो ये जो distance है, this distance is R, which is 0.2 meter or 20 centimeter from the center, from the given point. Right, तो ये जो center O है, O से P तक ये जो distance है 0.2 meter, और ये जो bar magnet is very short.
अगर ये शॉर्ट है, ओके, तो फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, राइट, फॉर short magnetic dipole, what condition we use? That is L square is very less than R square. तो ये जो small l है, the distance between the center and the any one of the pole, this distance is very small, so as compared to the distance from the given point. तो ये condition यहाँ पे apply करनी है. तो given में और क्या दिया, डाइपोल मोमेंट दिया है, that is small m is given 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो हमारा कांस्टेंट है μ0 अपॉन 4 पाई, दैट इज परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस अपॉन 4 पाई, व्हिच इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट. सो दिस इज व्हाट द यूनिट वी हैव टू यूज. देन हमको फाइंड करना है. नाउ द सेकंड क्या है, अलोंग द इक्वेटर लाइन. तो यहाँ पे इक्वेटर पे लेते हैं, तो ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. ओके, बी इक्वल टू ए, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. ओके, so let's find the magnetic induction or magnetic field. Magnetic field B along the axis due to axis at P due to short magnetic dipole, due to short magnetic dipole. So we have to use that formula. B axis is equal to क्या था, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस m अपॉन दैट इज d2, और r क्यूब ले लेते हैं. r या d1 है, d सेम है, राइट. तो d क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 times magnetic dipole moment 0.5 divide by d यानी कितना है, 20 सेंटीमीटर. तो 0.2 होल ब्रैकेट. लेट अस सॉल्व दिस. सिंप्लीफाई टू द 10 मतलब 1 होगा, 1 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, 8 into 10⁻³ which is equal to 1/8 into 10⁻⁷ into 10⁻⁴ plus 3. तो आंसर आएगा 1/8 into 10⁻⁴. आफ्टर सॉल्विंग दिस कितना आएगा आपको, 0.125. ओके, 125 मतलब 1.25 into 10⁻⁵ Tesla. This is the magnetic field along axis B axis. Now let's find the magnetic field induction due to the short magnetic dipole at a point P along the equatorial line. Okay, तो फॉर्मूला क्या है, B equatorial which is equal to μ0 अपॉन 4 पाई इंटू, अभी यहाँ पे बहुत सिंपल याद रखने को, यहाँ पे 2m है ना, यहाँ पे सिंगल m लेते हैं, विच इज स्मॉल m डिवाइड बाय डी क्यूब. आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्यों नहीं लिया, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है. तो शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है, एल स्क्वायर वेरी लेस देन आर स्क्वायर. तो एल स्क्वायर ये जो टर्म ये निगलेक्ट हो जाएगा फॉर दी शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, so let's write 10⁻⁷ into 0.5 divide by इसका कितना है, that is 0.2 4 bracket 2. So this can be written as 5 into 10⁻⁸ divide by 2 into 10⁻⁸. तो 5/2 मतलब 2.5 आएगा. तो 2.5 into 10⁻⁸
done. Yes. Sorry. Something missing. Oh, 5/8 हो गया यहाँ पे 8 आएगा 5/8 मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन भी डिफरेंट. ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा it will be 0.625 to 10⁻² -5 Weber per meter square or Tesla, or this can be written as 6.5 10⁻² -6 Weber per meter square or Tesla. This is the answer. Okay, so along the equatorial line, please take a screenshot. Okay, students, the next topic is after the numerical, that is the Gauss law of magnetism. We have studied the Gauss law in electrostatics. That is the total normal electric induction. Okay, is equal to the algebraic sum of the charges enclosed by that surface. That is the Gauss law in electrostatics. Okay, और जो total electric flux होगा जो भी, that is the Q upon epsilon times. Okay, so that is what the electrostatics law in Gauss law in electrostatics. So before the Gauss law in magnetism, we must know some terms related to that. So before that, we have the what is the solenoid, okay, and what can you say about the magnetic field produced by a current carrying solenoid? You might be wonder or you might be confused कि solenoid और electromagnet both are same. अभी मेरे पास जो है ये electromagnet है, right? Suppose if I remove this iron rod from this coil, wounded coil, so it become a solenoid. तो solenoid क्या है? It is the wire, copper wire, insulated copper wire, wounded over the non-conducting material, और PVC पाइप लिया या मार्कर लिया, मार्कर के ऊपर एक वायर को वाउंड किया और जो भी कॉइल बनेगा सर्कुलर कॉइल, तो वो बन जाएगा आपका सोलेनोइड. लेकिन उसके अंदर अगर इसको रॉड डाल दिया, आयरन रॉड, मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इंसर्ट कर दिया, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट विच बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. वो बिहेव बार मैग्नेट से काम करता है. अब ये जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड आल्सो एक्ट एज अ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट विच हैज अ 2 पोल्स, राइट. और सोलेनोइड का जो लेंथ है, the length of the solenoid is comparable to very large as compared to the cross section area of this radius. इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो रेडियस है, उस कंपेयर में, उसका रेडियस के कंपेयर में, द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी हाई, वेरी लार्ज. ओके, एंड जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी क्लोजली स्पेस, बहुत एकदम टाइटली स्पेस है. दैट इज द आइडियल सोलेनोइड, हम उसको बोल सकते हैं. ओके, तो चलो देखते हैं वन बाय वन. A solenoid is a long wire wound in the form of helix. Okay, in the form of helix. An ideal solenoid is a tightly wound and infinitely long. Its turns are closely spaced, and the solenoid is very long compared to its cross-sectional radius. मतलब like this. Okay, इसको इमेजिन करो कि इसके अंदर मेटालिक रॉड नहीं है, विदाउट रॉड है, तो वो बन गया आपका सोलेनोइड which behaves like a bar magnet. बार मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी ये सोलेनोइड भी बिहेव करता है. सपोज अगर सोलेनोइड को सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंडेड, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ओके, सो इट विल रिमेन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिमेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहेगा. ओके, चलो अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. टू ड्रॉ दिस डायग्राम, तो सोलेनोइड कैन बी ड्रॉन लाइक दिस in the form of helix. Ensure that the number of turns are very close to each other. लेकिन ये जो सोलेनोइड है, that is connected to the supply. यहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा आपको. नहीं आप बोलोगे कि it will behave like a magnet, तो नहीं, इसमें से करंट छोड़ना पड़ेगा. So current can pass through it. Okay, this is positive, negative. अभी करंट ऐसे जाएगा यहाँ पे. तो करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट विल एक्ट एज साउथ पोल. If when I look from this side, I found that the current is flowing in the clockwise direction. तो अगर ये क्लॉकवाइज है, वहां पे सी यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 10 आल्सो कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द coil, current carrying coil.
जैसे डायरेक्शन कैसे और पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं. द पोलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा है. ओके, अगर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, okay, so it can be drawn like this. So this will act as a south pole. तो ये साउथ पोल का काम करेगा. The current is flowing clockwise, so it will act as a south pole. तो यहाँ पे साउथ पोल का काम करेगा. Okay, when we see from this side, अगर इधर से देखोगे इसे, if I observe from this side, I found that it is एंटी क्लॉकवाइज. एंटी का एन लेने का. ओके, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी का एन लेने का. इन मतलब दैट इज नॉर्थ पोल. सो दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल. ओके, तो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे, उसका पैटर्न कैसे होगा, हाउ इट विल बी एक्टिंग. ओके, सो lines of force are from north pole and again on the south pole. It will be like this. Okay, the direction of magnetic from north to south. Right, outside the bar magnet or inside the bar magnet, it will directed from south to north. ऐसे जाएंगे. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड. यू गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. The magnetic lines of force are not parallel outside the solenoid because it also behaves like a bar magnet. Bar magnet जो property है, same properties shown by the solenoid. Okay, so diagram draw कर लेते. Now let us see what is the diagram for bar magnet. तो bar magnet इसको analogous कैसे होगा? So this is north pole, this is south pole, the middle of the bar magnet. Okay, यहाँ पे polarity दिखाते. The ends and the lines of force will be from north to south. Okay, so यहाँ पे enter कर रहा है साउथ पोल पे, and inside the bar magnet the lines of force will from south to north, and outside the bar magnet from north to south. So this is what a pattern for bar magnet. Okay, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बाहर जा रहे करें. यहाँ पे एंटर कर रहा है. So this is the pattern of bar magnet, magnetic line of force. This is the pattern of this solenoid. Okay, solenoid को यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है. So just draw the diagram. Okay, both the diagram. Okay, student. अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डायग्राम जो ड्रॉ किया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन that the magnetic field inside the solenoid, okay, they are parallel. So it will be parallel lines that indicate uniform magnetic field. Now outside the solenoid, there are the curved lines and which are widely spaced. Okay, so that indicate the non-uniform magnetic field. And at the midpoint outside the solenoid and near the midpoint, the magnetic field is weak. Okay, and near the poles, the lines are concentrated. So that is a strong magnetic field. Okay, at one end the lines are get diverging, बाहर जा रहे हैं, diverge. And another end that get converging. They are meeting at this point. Okay, so let us see one by one. The magnetic field lines are approximately parallel only near the center of the solenoid. So parallel अगर है, that indicate the uniform magnetic field. Okay,
indicating that uniform magnetic field induction. However, close to the ends, the field lines diverge from one end and converge at the other end. So diverge कहाँ पे हो रहा है? They are diverging at the north pole and converging at the south pole. They are entering. Okay. This field distribution is similar to that of bar magnet. देखो ये बार मैग्नेट है और एक सोलेनॉइड है, क्या फर्क है दोनों में? कुछ भी फर्क नहीं है. They behave like the same way. Okay. Thus, one end of the solenoid behaves like a north pole, and the other end of the solenoid behaves like a south pole. Okay. And the field outside near the midpoint of the solenoid, मतलब यहाँ पे जो field होगा, that is the weak magnetic field, or at the ends there is a strong magnetic field. Okay. So this is all about the solenoid. Now the next topic, that is the Gauss law in magnetism, जो हमने टाइटल दिया है उसको अभी भी स्टेट करते हैं. ओके. Hello students, let's see the next topic, Gauss law of magnetism. Explain the Gauss law for magnetic field lines. Okay, we have discussed in the previous lecture what is the Gauss law in electrostatics. Okay, that was the total charge enclosed by that surface. कोई भी अगर surface है उसमें Q charge है. Okay, what is the charge enclosed? Right. So total magnetic flux, net magnetic flux, that is phi b. Okay, with integration of E into ds. Net magnetic flux is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed by that surface. This is the Gauss law in electrostatics. But the Gauss law in magnetism, it is little bit different. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स आर ओपन, ओके, नॉट क्लोज. बट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक लाइन्स आर क्लोज्ड लूप, फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप, एंड दैट्स व्हाई. तो ये जो राइट हैंड साइड है ये थोड़ा अलग होगा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो लेट अस मेक द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट इज द नेट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ओके, net magnetic flux. So which is analogous to electrostatics? What is the Gauss law in magnetism? Say that net magnetic flux, that is phi suffix b. Okay, that is net magnetic flux. Okay, through a closed Gaussian surface, Gaussian surface is imaginary surface. Okay, तो यहाँ पे जो भी है, मान लो इसको मैं Gaussian surface ले लेता हूँ, नॉर्थ पोल को इंक्लोज किया. Okay, तो ये नॉर्थ पोल के अराउंड जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है, where the magnetic field lines are there, so this surface is known as Gaussian surface. Okay, यहाँ पे भी Gaussian surface आप ड्रॉ कर सकते हैं. Here also you can draw this point P, this point is Q. Okay, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, this point is P और this point is Q. Okay, तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, this is the Gaussian surface drawn around the magnetic poles. Okay, is zero. This is very important. This is the Gauss law in magnetism. अभी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बाय सफिक्स b इज इक्वल टू, नेट मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ b into area ds which is equal to 0. What we studied in Gauss law in electrostatics, that is phi suffix e is equal to integration electric field intensity into area. Okay, this is not 0. Why? Because in case of electrostatic the electric lines are open. Okay, so that contains some charge, so it can be written as 1 upon epsilon times the net charge. So this is the Gauss law in electrostatic. This is the Gauss law in magnetism. तो ये मैग्नेटिज्म में है, this is in magnetism, this is in electrostatics. This is what the similarity or analogy between magnetism and electrostatics. Okay, so here this is the solenoid, is the pattern of magnetic lines of force for solenoid. This is for the magnetic dipole or magnetic bar magnetic dipole.
and let us see how we will observe the electric dipole, like electric lines of force in the electric dipole. तो electric dipole है, this is a minus q plus q, okay, and यहाँ पे dipole मैंने ड्रॉ किया है. So these are the electric lines of force. So positive charge से lines of force start होते हैं and end to the negative charge. So here they are converging, here they are diverging. Okay. So this is what the electric dipole. Electric dipole. Just draw this diagram. Just draw the Gaussian surface over here. If you observe carefully for the Gaussian surface, the lines of force, magnetic lines of entering to the Gaussian surface same as that of the living. यहाँ पे भी lines of force जो जितना बाहर जा रहा है उतना enter भी हो रहा है. That is the same. This is what the analogy between Gauss law in magnetism and Gauss law in electrostatics. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो कुछ पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा इसमें. ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The Gaussian surface P does not include poles. ओके, ये जो P surface है यहाँ पे कोई पोल नहीं है, इंक्लूड नहीं है. While the Gaussian surface Q includes north pole. यहाँ पे जो Q है वहाँ पे north pole include है, right? And solenoid and positive charge in case of electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम मैंने रब कर दिया. वहाँ पे था ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे Q सरफेस है विद दैट इनटू नॉर्थ पोल. सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल है, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड्स इन दैट गॉसियन सरफेस Q. ओके, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग सरफेस P. व्हाट इज द लाइंस ऑफ, ऑलरेडी आई हैव डन दिस एक्सप्लेनेशन इन द प्रीवियस. ओके, तो सरफेस P इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग द सरफेस. जितने लाइंस एंटर हो रहे हैं उतने लाइंस बाहर भी जा रहे हैं. दैट इज इन केस सरफेस P. Now for Q surface also the lines of force entering are same as that of the living surface. Okay. Now for an electric dipole the field lines begin from positive charge. हमने देखा है property of lines of force. The electric lines of force begin from positive charge and end to the negative charge that we have discussed in the electrostatic topic. Okay. For a closed surface Q there is a net outward flux since it does include a net positive charge. So phi suffix E, that is the electric flux, is equal to integration E into ds. E is the electric field intensity, ds is the area vector, which is equal to the 1 upon epsilon times the net charge enclosed by that surface. Okay, but this is totally different in case of magnetism. तो magnetism में हमने क्या देखा? In case of magnetism, that is the phi suffix B is equal to the integration of magnetic field induction over the surface ds, which is equal to 0. तो ये डिफरेंस यहाँ पे ही है. So this is the Gauss law in magnetism or magnetostatics. Gauss law of magnetostatics. This is the Gauss law of electrostatics. Okay. तो फ्रॉम दिस यहाँ पे हम ऐसा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चार्ज है पोल है that exists. Electric dipole exists. Positive negative charge can be isolated, but here the magnetic pole cannot exist. Magnetic monopole not exist. Single pole possible नहीं है, लेकिन electric dipole में single pole exist. The net positive charge enclosed. तो उसका हम क्या लिख सकते हैं? Net magnetic flux, sorry, net electric flux is equal to Q by epsilon times. यहाँ पे Q क्या है? Q is positive charge. Positive charge enclosed by that Gaussian surface. but यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0. So this is just explanation about the Gauss law of magnetism. Is that clear? Sure.
Okay, so the next question is what could be the equation for Gauss law of magnetism if a monopole of strain P is enclosed by surface? अगर monopole exist है तो if K okay but it does not exist लेकिन उन्होंने prediction किया है कि अगर monopole exist हुआ तो क्या होगा Gauss law in magnetism. Okay, so according to Gauss law in electrostatics, right, the net electric flux through any Gaussian surface is proportional to the net charge enclosed by the surface. Okay, so phi E is equal to E into ds is equal to q by epsilon times. Okay, तो यहाँ पे q जो है क्या चार्ज है. Okay, और यहाँ पे क्या epsilon जीरो क्या परमिटिविटी in free space constant in free space or vacuum. Free space or vacuum. So what could be the Gaussian law in magnetism? Okay, so in magnetism, if single monopole strength is P, then what could be the Gaussian magnetism? That is phi suffix B is equal to integration B into ds, which is equal to, okay, charge is replaced by pole strength, that is a P into, okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, that will be the mu zero, so mu zero into P is what, so mu zero क्या permeability, mu zero is permeability, okay, that is the net magnetic flux is equal to P times permeability in free space. Okay, that is the Gauss law in magnetism. The next topic is earth magnetism.